नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देख रहल छियै वीडियो के अंतर्गत अलंकार में हमसब अर्थालंकार के एखन चर्चा कऽ रहल छी। अर्थालंकारक हमसब इससे पहले 11टा भेद के देख चुकल छी। आइ ए वीडियो के अंतर्गत हमसब देखब दूटा अलंकारक भेद, व्यतिरेक अलंकार आ प्रतीप अलंकार। दुनू अलंकार अर्थालंकारक भेद अछि, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार अछि। तो हमसब आगाँ बढ़ै छी व्यतिरेक अलंकार दिस। यदि अपने अखन तक RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं कने छी तो सब्सक्राइब कर ली। एहन और वीडियो सब बनत तो अपने यूट्यूब चैनल पर पहुँच जात। आ वीडियो नीक लगत हुए तो लाइक शेयर सेहो करी। व्यतिरेक अलंकार आइ हम सब देखब 12हम अलंकार अछि अर्थालंकारक। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेकक अर्थ होइत अछि अधिक। व्यतिरेकक अर्थ होइत अछि अधिक आ व्यतिरेक जे अछि दू शब्दक योग से बनल अछि, बी प्लस अतिरेक। व्यतिरेक प्रायः अन्य अलंकार में उपमेयक अपेक्षा उपमानक उत्कृष्ट वर्णन रहै छै, किंतु व्यतिरेक अलंकार में उपमानक अपेक्षा उपमेयक उत्कृष्ट या अधिक वर्णन रहै छै। एहिमे अछि जे आन सब अलंकार में देखैत हेबै कोनो में जे उपमानक उत्कृष्ट वर्णन कयल रहैत अछि, लेकिन एहिमे विपरीत अछि जे उपमानक अपेक्षा उपमेयक उत्कृष्ट वर्णन कयल गेल अछि व्यतिरेक अलंकार में। भगल व्यतिरेक अलंकारक लक्षण। आगाँ देखै छी हमसब व्यतिरेक अलंकारक उदाहरण सब। पहले जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ, तो पुण्य काठ कठोरे, जो जगदीश निशाकर, तो पुण्य एक पक्ष इजोरे। कहल गेल अछि जे जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ, विद्यापतिक पद अछि। जखन माधव तोहर कत कर बड़ाई वाला पद में अछि जे भगवान के जगदीश के कह रहल छै जे अहाँ के हम किनका से बड़ाई करब, यदि हम श्रीखंड सौरभ से करै छी, उनका से उत्कृष्ट वर्णन अगर करब हम तो वो की अछि काठ कठोर अछि। चंदन भ गेल श्रीखंड सौरभ, यदि ऐसा जे जगदीश के भगवान के तुलना करै छी तो की भ जाइत अछि, तो वो जे अछि काठ कठोर अछि, लकड़ी अछि, सबसे कठोर लकड़ी में से मानल जाइत अछि। जो यदि निशाकर, यदि चांद से करै छी, चंद्रमा से अगर तुलना करै छी, अहाँ के उपमा दै छी तो इहो की अछि एके पक्ष इजोरे। तो चंद्रमो जे अछि इहो के एके पक्ष में इजोत होइत अछि, एक पक्ष में अन्हरिया होइत अछि। तैं इहो से उपमा नहीं देल जा सकैत अछि। ताहिमे कहल गेल अछि जे भगवान जे छथि जगदीश, हुनक उपमा जे श्रीखंड सौरभ माने सरल से देल गेल अछि, जे कि अछि काठ कठोर अछि, आ चंद्रमा से देश अछि तो इहो की अछि एके पक्ष इजोत अछि। ताहिमे उपमान जे भऽ गेल श्रीखंड सौरभ आ चंद्रमा, आ उपमेय भऽ गेल जगदीश, हुनक वर्णन करय के लेल यदि ओहि दुनू के लिए तो ओ दुनू कम पड़ि जाइ छै। तैं उपमान के अपेक्षा उपमेयक ओहिठाम
अधिक वर्णन कयल गेल अछि, अगर बढ़ा के वर्णन कयल गेल छै तऽ भऽ गेल उत्कृष्ट वर्णन, उपमेयक उत्कृष्ट वर्णन। तो भऽ गेल। अगिला उदाहरण देखै छी, मणिक समान औरे नहीं दोसर तनिक तनिक हो पाथर नामे। कहल गेल अछि जे मणिक समान, मणि जे अछि एहिके समान और दोसर कोनो नहि अछि, लेकिन इहो की अछि, एकर नाम अछि एकटा पाथरे अछि। ओ मणि जे अछि एकटा पाथर अछि, जाहिमे गुण तऽ अछि जे एहिके समान और कोनो नहि अछि, लेकिन ई की तऽ पाथर अछि, सबसे कठोर अछि। तैँ इहो जे अछि भगवानके जगदीशके इएह पदके अगिला पद अछि, जे के समान अगर हुनको समान कहब तऽ इहोके समान नहि हैब। इहोमे जे अछि उपमेयके उत्कृष्ट वर्णन कयल गेल अछि उपमानक अपेक्षा। मणिक समान औरे नहीं दोसर तनिक हो पाथर नामे, जे ओकरो जे नाम अछि पाथरे नाम अछि। इहो जे अछि मणि जे अछि सेहो की अछि, पाथर अछि। तऽ भगवान जगदीशके हुनकोसँ उपमा नहि देल जा सकैत अछि, नहि सौरभ अति से। सौरभ अति दुर्लभ तऽ अछि, लेकिन की अछि, काट कठोर अछि। निशाकर जे अछि चंद्रमा सेहो एकरे पक्षी जोत होइत अछि, तऽ इहो सबमे की अछि, कमी अछि। तऽ उपमेय भऽ गेल एहिठाम जगदीश, आ उपमान भऽ गेल ईसब सौरभ, निशाकर, मणि, ईसब भऽ गेल उपमान। एकटा और उदाहरण देखै छी आगाँ, सुंदर तब दृग कमल सन किंतु दोष अछि एक, कखनो कखनो टेढ़ भऽ मुनहिक हरे विवेक। इहो में सुंदरी तब दृग कमल सन में कहल गेल अछि नायिका नेत्र जे अछि, दृग मने नेत्र, नयन कमल के समान अछि, किंतु इहो में की अछि तऽ एकटा दोष अछि, किंतु दोष अछि एक, कखनो कखनो टेढ़ भऽ मुनहिक हरे विवेक। आ जब ओ कखनो कखनो टेढ़ भऽ के देखैत अछि नायिका एक कमल फूल सन आँखिसँ, तऽ ओहिसँ की मुनि से छै हुनको की विवेकके हरण कऽ लैत अछि। तैयोमे उपमानके अपेक्षा उपमेयक अधिक उत्कृष्ट वर्णन कयल गेल अछि। सुंदरी नायिका दृग नेत्र जे अछि कमलके समान अछि, किंतु इहोमे की अछि, दोष अछि। तो भऽ गेल उपमेयक अपेक्षा, उपमानक अपेक्षा उपमेयक उत्कृष्ट वर्णन कयल जाइत रहैत अछि जाहि पदमे, तऽ ओ भऽ जायत व्यतिरेक अलंकार। अगिला अलंकार देखब हमसब, प्रतीप अलंकार अछि। प्रतीप अलंकार सेहो अर्थालंकारक भेद अछि। जतऽ उपमानसँ उपमेयक अनादर कयल जाइत अछि ओ प्रतीप अलंकार कहबैत अछि। जाहिठाम उपमानसँ उपमेयक अनादर कयल जायत, अनादर कयल जायत मने उपमानक अपेक्षा कयल जायत, तऽ ओ भऽ जायत प्रतीप अलंकार। जेना देखू उदाहरण में अछि, सर्प करहने दर्प जे हम ही जगत में एका विषधर, तोहर सदृश अछि दुर्जन वृंद अनेक। जाहिमे सर्पके ओहिठाम अनादर कयल गेल अछि, जे अहाँ अथी नहि करू, दर्प नहीं करू, घमंड नहीं करू, जे हम ही जगत में माने दुनिया में एकटा सबसे अधिक विषधर छी। तोहर सदृश अछि दुर्जन बिंद अनेक, जो सर्पों सब अधिक विषैला समाज में दुर्जन दुष्ट सब अछि अनेको अनेक। ताहिमे उपमान भऽ गेल सर्प आ उपमेय भऽ गेल दुर्जन बिंद। एहिमे उपमेयसँ उपमानक अनादर कयल गेल अछि, जे साँपोसँ अधिक विषधर की अछि, दुर्जन सब अछि। सर्प करहने दर्प जे, सर्प अहाँ घमंड नहीं करू, हम ही जगत में एका विषधर, जे हम ही जगत में पूरा दुनिया में एकटा विषधर छी। तोहर सदृश अछि दुर्जन बिंद अनेक, जे साँपसँ अधिक समाज में दुर्जन जे अछि, दुर्जन लोकनि सेहो की अछि, साँपोसँ यदि ज्यादा बेसी विषधर अछि।
से अगला पद अछि। दोसर उदाहरण देखब हमसब। बिना विवेक बजै जन, सुमुखी बदन संचान, तुक्ष सुधा के मूढ़ बुन, माने अधर समान। एहिमे कहल गेल अछि, एहिमे बिना विवेक बजै जन, माने जिनका लग ज्ञान नहि छनि, इएह बजै छै जे सुमुखी बदन संचान, जे चान जे अछि सुमुखीके, नायिकाके बदन समान अछि। ई तऽ चान जे अछि नायिकाके बदनके आगाँमे किछो नहि अछि। इहो जे चानके उपमानके उपमयसँ अनादर कयल गेल अछि, जे बिना विवेक बजै जन, माने जिनका लग ज्ञान नहि छथि सएह बजै छै जे सुमुखी बदन सन चान, माने सुमुखीके नायिकाके बदन सन चान अछि। नायिकाके बदन की अछि? चानोसँ अधिक सुन्दर अछि। तो ये चाँदके अनादर कयल गेल अछि उपमयसँ। तुक्ष सुधाके मूढ़ पुनि, माने अधर समान। फिर कहैत अछि तुक्ष सुधा, अमृत जे अछि से तुक्ष अछि, एकरा जे मूढ़ माने मूर्ख सब फिर पुनः बुझि लैत अछि जे नायिकाके अधरके समान, जे नायिकाके अधरके रस अछि एहिके समान जे अछि अमृतके बुझि लैत अछि। इहो की अछि? मूर्ख अछि, जे ओहिके नायिका अधरके समान अमृतके बुझैत अछि। नायिकाके अधर रस अमृतोसँ बढ़िके अछि। इहोमे जे अछि तुक्ष सुधा, सुधाके जे अमृतके अछि, जे उपमान भऽ गेल, एकरा अनादर कयल गेल अछि अधरसँ, नायिकाके अधरसँ, अधर रससँ, उपमयसँ। इहोमे जे अछि उपमयसँ उपमानक अनादर कयल गेल अछि। ऐसे अगला तेसर पद देखब। जगदम्बा पद सेविके, जगदम्बा पद सेविक कल्पक की काज, कल्प तरुक की काज, स्वर्ग इच्छा व्यर्थ थिक, बैस रमेश निपराज। जे जगदम्बा पद सेविका कल्प तरुक की काज, माने जे जगदम्बा माँ जगदम्बाके सेवा करै छथि से हुनकाके लेल फिर कल्प तरुके कोनो काज नहि छनि। कल्प तरुक होइत अछि इच्छाधारी वृक्ष, तरु माने वृक्ष जे स्वर्गमे रहैत अछि। जे जगदम्बाके पदके सेवा करै छथि, पूजा करै छथि, हुनका कल्प तरुके कोनो काज नहि छनि। माने कल्प तरु उपमान भऽ गेल, ताहिके जगदम्बाके पद माने उपमयसँ अनादर कयल गेल अछि ओहि उपमानक। तहिना अछि स्वर्गक इच्छा व्यर्थ थिक, माने स्वर्गके इच्छा व्यर्थ अछि, बेकार अछि। जे स्वर्गके इच्छा करै छथि, यदि ओ रमेश निपराजक राज्यमे रहै छथि तऽ हुनका लेल स्वर्गके इच्छा व्यर्थ अछि। अर्थात रमेश निप जे छथि राजा, हुनक राज्य जे छनि स्वर्गोसँ बढ़िके छनि। तैँ ओहिठाम उपमय भऽ गेल, रमेशके निपराज माने उपमान भऽ गेल स्वर्ग, तऽ इहोमे उपमानके अनादर कयल गेल अछि उपमयसँ। तऽ इहो भऽ गेल प्रतीप अलंकारक उदाहरण। तऽ जगदम्बा पद सेविके कल्पतरु की काज, स्वर्गक इच्छा व्यर्थ थिक, बैस रमेश निपराज, माने रमेशक राज्यमे बसल छथि तऽ हुनका स्वर्गके इच्छा नहि करऽके चाही। कारण जे रमेश निपराजक जे राज्य अछि, हुनक राज स्वर्गोसँ बढ़िके अछि। आ फेर जे कल्पतरुके कोनो इच्छा नहि करबाक चाही, जे जगदम्बाके सेवा करै छथि, कारण जगदम्बाके सेवा कयलासँ हुनकर सब फल प्राप्त हेतनि, मनोरथ पूरा हेतनि। इएह काज कल्पतरुके सेहो अछि। तऽ एहिके कल्पतरुकमे उपमानके उपमयसँ अनादर कयल गेल अछि। एहिमे रमेश उपमयके उपमयसँ उपमान स्वर्ग जे अछि तकर अनादर कयल गेल अछि। तऽ भऽ गेल प्रतीप अलंकारक उदाहरण। एहि प्रकार हमसब देखलहुँ वीडियोके अंतर्गत दूटा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार आ प्रतीप अलंकार। दुनू अलंकारक उदाहरण, लक्षण, परिभाषा सब। यदि वीडियो नीक लागल हुए वीडियोके लाइक
आ शेयर करी। यदि सब्सक्राइब नहीं कने छथिन धरि तो चैनल के RS मैथिली चैनल के जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।